Valentine's Day, who would you pick as your villain date? I can't think of anyone right now. I mean, I really can't. If I think of somebody, I'll let you know. Just one last question for Disha. Just looking at your young career so far, when we look at you, you're this divine beauty, and then some of the roles which you've done, they might kind of border a bit on femme fatale. So is this something which, what attracts you to the, for a beauty like you to, what attracts you to these kind of roles? You're the femme fatale. What for Tara? Oh, Disha. Oh, अभी तो इसको Disha. So same answer तुम copy paste करो चलो. हम Disha को सिखा रहे थे वही तुम. सर आप डिसाइड कर लो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे विलेन वर्सेस विलेन फीमेल वाला आएगा ना आप ये सवाल फिर से पूछ लेना. Yeah, these roles. Hi, so to be honest, I mean, I'm assuming because of Tadap and now. Yeah, no, I think it's just so much fun. Sometimes it's good to be bad, sir, and I think it's nice to have the opportunity to do that. I'm very new to this industry, but I think it's more exciting and fun to do something unexpected than your run-of-the-mill heroine roles, which we've seen a dime a dozen in the last many decades of this industry. So I think since we're changing, the industry is changing so rapidly. I think it's just more exciting for us as the young ones to take the baton forward and just do something different with our skill and our talent and make our voice heard. I think it's about time. Yeah. Don't you feel that actresses are finally getting very meaty parts? As Arjun said, that Ek Villain Returns is not about two men fighting, it's also about the two ladies and why they are the villains, the four of them. So firstly, what do you think took so long for finally seeing actresses up there doing the action, doing meaty roles, and how much did the role excite you personally? Well, I think once the perception of the audiences changes, the industry will change. It's all about people coming and watching your films, and I feel like once audiences accept us as, the powerful ones, the strong ones, it'll automatically, everything will just fall into place. And I think I am somewhere, I feel like now spending so much time with Mohit sir that I am somewhere twisted in my head, and and I feel like that sort of thing that I had in my head came into life through this character. Fantastic. Tara? Ma'am, I think it's got a great deal to do with having a conversation about something that perhaps makes us uncomfortable as a society or as a people. And I think over the last few years, women have had a voice and had their voices heard. And I think the fact that we can sit here today as a group of people in a room and just have this conversation, it just makes it more interesting and more exciting for us. And the fact that we can have that conversation makes it more possible to have these roles. My next film, Apurva, that I just announced very recently, is speaking on this very subject about powerful, strong women and having their voice heard. So I think for sure there are more scripts for young actors and young women today, and I think it's great. It's about time. अर्जुन सर जी सर. मैं जी मिश्रा सामना से जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, ये इंडस्ट्री में लगातार रिटर्न कोई भी फिल्म का सीक्वल बनाने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या अच्छे कंटेंट का कमी है या प्रोडक्शन हाउस का एक लिमिटेड टीम के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है? सर देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका. जब हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी चल रही है, वो सब रिटर्न ही आ रही है. अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज अभी चली है, थॉर अभी चली है. अच्छा, they don't want this answer. But I would like to answer it properly so we can end. I love you. हो गया. जी. Next, we'll take two more questions, yeah. जी. ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ सर. रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है फैन से और काफ़ी लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं.
और काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे जी। हैं। आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए। मैं आपसे मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज द थिंग इज यू शुड बी अलाउड टू बी योरसेल्फ। ही इज दैट वे। मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज़ को करते हैं विदाउट बीइंग हिमसेल्फ। कोई दिखावा नहीं है उनमें। आप अभी उन्हें 10, 11, 12 साल से देखते हैं एज मीडिया। व्हेन ही कम्स इन, दिस वार्म, दिस एंजॉयमेंट, दिस एनर्जी, उनकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। उनकी मर्जी है, उनका सोशल मीडिया, उन्हें सही लगता है इस वक्त to be in that way that he wants to be. He wants to celebrate being comfortable in his own skin, and I think we should respect that. Having an opinion is fair. I think trolls को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि importance देनी ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, because कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना। आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए। Full credit to the boy if he is very happy doing what he is doing. If he is not being forced into it and it's not being done in a wrong way or a crude way, you should respect that. He's allowed to do what he wants to do and be happy, and he's making people happy by doing that also. All right. Films that they have enjoyed. You look at Tom Cruise today. He's come back after so many years and is doing Top Gun. Sorry. Yeah, so you have Fast and the Furious. आप Top Gun भी देख लीजिए। इतने सालों बाद वो फ्रेंचाइज फिर से शुरुआत हुई और उसमें टॉम क्रूज ही हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप एक फिल्म भी देखिए, डायरेक्टर अपनी कहानी को आगे लेता है। अगर कोई स्टूडियो है या प्रोडक्शन है, अगर कहानी में दम है, लोगों को पसंद आई है और हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो बेशक हमें करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज। इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू कैरेक्टर एंड वी कैन एक्चुअली मेक यू हैव मोर फन कमिंग टू द थिएटर, दैट हैज नथिंग टू डू विद कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। ये जो पहला पार्ट बना था वो तो कंटेंट था ना सर, पहला चला वो तो अच्छा कंटेंट था, तो वो अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाने का तो हमारा हक है, क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है। तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सिचुएशन। अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है और एंजॉय करती है, चाहे वो OTT हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो, I think if you see Bhool Bhulaiya after so many years, there's a second part or a continuation that's come and is done well. So there is no harm in considering it. I think if you have to respect the audience. If we do original films, they do well, don't do well. The ones that do well, if they have a chance to have a sequel, then I think we have every right to entertain people. Look at Rohit Shetty sir, उन्होंने गोलमाल की पूरी फ्रेंचाइज बनाई और उसकी वजह से कितने लोग एंटरटेन हुए। तो ऐसा नहीं, आई थिंक सिंघम देखेंगे पार्ट 2 बनी, उसके बाद सूर्यवंशी में आया कितना। सो द वर्ल्ड इज अ प्लेस टुडे वेयर यू कैन एक्चुअली एंजॉय कैरेक्टर्स एंटरिंग ईच अदर स्पेसेस, यूनिवर्सेस, and Hollywood is a big starting point of that if you look at it. So I think if you have to ask the question, it is audience driven. Audience enjoys it. Hindustan की audience भी Avengers को उतना enjoy करती है because all of them are coming together. So those are all franchises taken ahead. So yeah, I think that's a very long answer. Sir, actually, I love you so much. I love you too. Yeah, what's your name? Sorry? Rekha Suthar from Radio Adda. रेखा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज काइंड वर्ड्स। जो आपने कहा वो एक एक्टर यही सुनना चाहता है 10 साल के करियर में, जो आपने कहा दैट आई वर्कड हार्ड, सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। आई लव यू अ लॉट। टू आंसर योर क्वेश्चन, यू नो द थिंग इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप शिद्दत से प्यार कर सकते हो या नहीं, बिकॉज जब आप प्यार में होते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप पूरी शिद्दत से ही कोशिश करते हो। कई बार उसमें कुछ रह जाता है या कुछ वर्कआउट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे ईमानदारी से या शिद्दत से नहीं किया। निजी ज़िंदगी में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं, या आप जो पर्दे पे देखते हैं वो एक कहानी है जिसमें दी एंड आता है। हम जब किसी से प्यार करते हैं हमें निभाना भी पड़ता है, और वो शिद्दत से निभाना भी ज़रूरी है। प्यार करना आसान है, उसे निभाना, द सर्कमस्टांसेस आर ऑलवेज गोइंग टू चेंज, इवॉल्व, एंड इन टुडेज सोसाइटी इवन मोर सो, बिकॉज you need to allow your partner to feel comfortable and confident and allow them to be. So I would like to say यार, शिद्दत से प्यार करना मतलब एक दूसरे को इज्जत देने के साथ साथ you should be able to enjoy the bad along with the good, and I think that is the most important part in society today, that sometimes we are not able to go through with love. I think that is the most amazing thing. If you can fall in love and go through the bad days also, that is the true shiddat in mohabbat, if you call it. लेकर बोला जाए, जानना चाहूँगी बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है अभी तक का प्रमोशन से रिलेटेड? मेरा गला दुख रहा है, मैं तीनों से पूछूं। दिशा, moment while promoting the film, if you've had a moment, nicest fan moment. So I have a lot of these young fans and I do love them a lot, and wherever I go I do see them, and yeah, I'm just very glad like I get to meet them in person now finally, because I'm getting out of my house a little more, and yeah, I just love them a lot. Tara? Love you, Disha. Love you, Disha. I love you. Tara, for you? हम सब के लिए we've been very lucky. हम बहुत सारे सिटी टूर्स पे गए हैं, एंड आई थिंक हमारे सारे पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं by so many fans.
जो स्केच करके हमें देते हैं ऑन स्टेज. So that's been really nice कि we've been to Ahmedabad, Nagpur, Pune, we're going to Delhi, so many other places as well. And I think जब वो time निकाल के portraits बनाते हैं हमारे लिए या notes लिखते हैं, that's very very special. जॉन सर. मैं तो प्रमोट करता ही नहीं हूँ. मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक. तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी, अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी. बट या आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूँगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है आपके लिए? मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे. ओके इन लाइफ I guess for everybody about tattoos, you know, so someone does something like that cannot be taken off. That means a lot. Lekin that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know okay what your worth is rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? कोई अच्छा बोलेगा you'll feel very good, कोई बुरा बोलेगा you'll feel very bad. Don't let that affect you. You know? And the digital media is filled with all this. Thank you. Thank you so much.